इंडिया से ग्रेजुएट होके बंदे दुबई, सिंगापुर जैसी डेवलप्ड कंट्रीज में सर्व कर रहे हैं। In foreign, they have a very planned infrastructure, but in India, we need planned infrastructure. तो ऐसी क्या चीज़ है जो IITs, NITs को किसी भी अदर इंस्टीट्यूट से डिफर करती है? The demand is of the skills. सिर्फ एजुकेशन से नहीं होता, मतलब it's like not only your subject knowledge can help you, but additional skills are very much required. सर, लड़कियों को ये मना किया जाता है कि आप सिविल इंजीनियरिंग मत करो क्योंकि साइट पे रहना पड़ेगा, धूप होएगी, मजदूरी करवाएंगे। तो ये कितनी सच्चाई है इस बात में? डर हमेशा रहता था, even I had that fear. तो मैम, मार्केट में ऐसी अफवाह कह लीजिए, वो ये हवा उड़ रही है कि इंजीनियर्स बेरोजगार हैं, उनके लिए जॉब्स नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं मेरे साथ SGT Pulse, योर डेली डोज ऑफ व्हाट्स नाउ एंड व्हाट नेक्स्ट। चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो, फिर चाहे आप चिल ही क्यों ना कर रहे हो, लेटेस्ट अपडेट के लिए और ऐसी ही ज़रूरी बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के इस स्पेशल पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट डॉक्टर नेहा गुप्ता मैम, जिन्होंने अपनी PhD IIT रोपाड़ से की है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में। सो वेलकम टू SGT मैम। सबसे पहले मैम, अक्सर हम ये देखते हैं कि सॉइल की जब हमें स्टडी करनी होती है तो उसके लिए हमारे पास एक अलग ही स्पेशलाइजेशन है, दैट इज जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। इन्वायरमेंट के लिए हमारे पास इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो हाइड्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग का क्या कंसेप्ट है? Pushkar, I know, I hope that you're aware with the fact कि जल ही जीवन है. Yes, ma'am. Yes, so the ultimate source of life is water. Yes. And the origin of water and how the water flows, exists, and how it ends into oceans is governed by a cycle known as hydrological cycle. Yes. So रेनफॉल से लेके रन ऑफ तक का जो प्रोसेस है, जितने भी कंपोनेंट्स, जितने भी प्रोसेसेस उसमें आते हैं, इन्फिल्ट्रेशन कह लीजिए, इवेपोट्रांसपिरेशन कह लीजिए, दे आर गवर्न्ड बाय डिफरेंट मैथमेटिकल इक्वेशंस, डिफरेंट कॉन्सेप्ट, डिफरेंट प्रोसेसेस. सो टू understand these processes, we needed a science, and that is hydrological science. And you need a different kind of study and specialized study for such analysis, and that's what encompasses the hydrology. So मैम, जैसा कि आपने कहा, वाटर हमारे लिए बहुत इसेंशियल है, तो एक टर्म आती है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस आप लोग फेस करते हो? क्या चैलेंजेस हम फेस? वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, as the terminology suggests itself, कि water का हमें manage करना है. How the water is existing, how we are putting it to use, and how it can be reutilized in different way. So the first and the foremost challenge is data. We are data. These analyses are data extensive. यहाँ पे बहुत सारा data information लगता है, but unfortunately because of the poor recording system, हमारे पास ये सब available नहीं हो पाता है. So that is challenge one. Second is the policies, because कोई भी वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो है वो एक गवर्नमेंट पॉलिसी से बाउंडेड होता है, एंड यू हैव टू फॉलो सर्टेन नॉर्म्स जो कि आपके किसी सिटी, कंट्री बाउंड्री से रेगुलेट करते हैं. सो अप्लाइंग देम इज अ बिगर चैलेंज. सो आई थिंक दीज आर द मेन कंसर्न्स दैट वी फेस while we are planning or developing or employing any practices that encompasses the water resource management. क्योंकि ये ज़रूरी भी इसलिए है क्योंकि जो हमारा पोर्टेबल वाटर है वो काफ़ी ही बहुत कम अमाउंट में, तो ऐसे में जो पोर्टेबल वाटर है उसे भी अगर हम अपना कंजर्व करना चाहें तो क्या उसके लिए क्या करेंगे? See, the foremost thing is nature based practices. आप सस्टेनेबल सिटी की बात सुनते हैं, सस्टेनेबिलिटी की बात सुनते हैं. सस्टेनेबिलिटी सेज कि आज भी प्रोटेक्ट करो एंड फ्यूचर में भी उसकी कंडीशंस अच्छी रहें, या हमारी फ्यूचर जनरेशन भी उन रिसोर्सेज को यूज कर पाए. यूज इट इन सच अ मैनर दैट द फ्यूचर जनरेशन कैन यूज दोज रिसोर्सेज. सो बेसिकली व्हेन यू थिंक अबाउट sustainable practices, so you have to put those into places. For example, the rejuvenation of the lakes, ponds area, which can be your artificial storage, because ultimately the rainwater needs some place to go in. So rainfall happens, then it flows down. If there are no proper storage or proper conditions which can store these water, the water would go to waste. And that's how the flooding conditions generate. Yes. So when I talk about a single home, or a house or a residential building or a commercial building, I think rainwater harvesting is a great source
for conserving the water and directing it in such a way that it do not create any havoc like urban flooding, which is a bigger concern nowadays. तो ये जो हाइड्रोलॉजी है वो इन सब से भी डील करती है. तो मैम एक क्लाइमेट चेंज बहुत मेजर क्राइसिस बना हुआ है, तो हाइड्रोलॉजी पे इसका क्या इम्पैक्ट है, क्या सोल्यूशन इसका हो सकता है? The term itself says climate change. Yes. Something is changing. Yes, yes. Yes. So these climate changes basically change or bring the changes to various attributes of the hydrological cycle. The seasonality of the rain is changing. The intensity and the frequency are changing. The magnitude is changing. The seasonality of, I would say, the occurrences. Like earlier we had a monsoon for a fixed duration, but now we have random rains. ये सारी चीज ऑब्जर्व करें. These changes are observed or are observed all over. Like I'm talking only about India, but they are observed all over the world. Okay. Specifically for India, like the state like Gujarat, Rajasthan, they were not flood-prone zones. But I guess in the current year, we had one of the vast flood in the area of Gujarat. So these are the challenges that we face through climate change, or that the climate change are resulting into these. And this is all hydrology, how it is. So मैम एक स्टेट है हमारे पास तमिलनाडु, सब जानते हैं सी से सराउंड है वो, लेकिन वहाँ पे रिपोर्ट्स बताती हैं वाटर क्राइसिस सबसे ज़्यादा है. ठीक है, तो जिसके लिए वाटर दूसरे अदर स्टेट से आता है, तो ऐसे में अब वो क्या कभी उसमें वाटर पहले जैसा हो पाएगा या फिर? See, if they imply good practices, then definitely we can reach some solutions. We can find some solutions. But for that, we need to preserve traditional practices as well as apply some modern alternatives for that. Traditional practices से क्या? Like earlier, if you have heard, there used to be Baudi kind of thing. Baudi, yes. In the surroundings. So we have rain butts where the water will flow down. We have catchment areas. Yes. We have impervious areas basically, so that the water can percolate and be a part of groundwater. So we need to create some artificial ponds, lakes, or we need to increase the forest cover so that the roots of the forest behave in such a manner that they can help us in retaining that water into the soil. Otherwise, the water will just flow. So we need to enhance such practices. There is a concept of green roofs and blue roofs that helps in reducing the temperature, because obviously the green forest and water resources help in lowering down the temperature that happens in urban areas. Also, they provide some storages, and that water could be directed again to the groundwater or to the storm channels. Green roof, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जो हम roof पे gardening करते हैं, something like that. Yeah, not exactly gardening. Basically, if we go by terminology, it is a shallow depth that you create over the roof. Okay. But yes, gardening is one form of green roofs, and that should be encouraged. About blue roof, मैं ये सोच रहा हूँ swimming pool जो हम बनाते हैं. No, it's not about swimming pool. Swimming pool is different. Swimming pool is not water conservation. Blue roof आपने बोला ना? Blue roof is a term, but it suggests that it is a facility that helps in storing the water for around 24 hours so that you don't have immediate peaks of floods. तो मैम ये तो हम अपने यहाँ भी NCR एरिया में भी कर ही सकते हैं अप्लाई? Definitely. It should be applied, and in the recent development goals and recent policies of government, it has been made mandatory also that some component of rainwater harvesting, green roofs should be a part of any infrastructure project. तो मैम हाइड्रोलॉजिकल इंडस्ट्रीज में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जॉब की? See, I would not say hydrological. It's all water resources. Okay. We work combinedly with different sectors of water and form a water resource engineering, I would say, domain. So water resources is not only confined to hydrology. It has hydrological aspect as well as it has treatment aspect, water treatment. And we have landscaping also with us. So there are several aspects. And I think one can go in designing, planning of the infrastructure, and designing of the nature-based solutions for sustainable cities, which is a prime important thing. Modeling of the floods in urban areas or riverine flood, because we see a lot of
river flooding nowadays in areas. So yeah, these are all the areas where one can focus on. And also with the advent of, I would say, AI, artificial intelligence, and certain resources where we have good system of data collection, I think a good quality of data can be collected and certain information systems can be formed, which will enhances the power of a civil engineer to design good infrastructure. तो इंडियाज में इसकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं या फॉरेन में है? It's everywhere. Okay. See, it is not only confined to India, but we can say that in foreign, they have a very planned up infrastructure. But in India, we need planned infrastructure. So it's like, because the problem or the type of the problem that we are facing, I would say that there is a great and a huge chance of employment in India. जैसा कि आप बार बार कह रहे थे कि डेटा एरर की बहुत होता है इंडिया में, तो उस चीज को हम कैसे क्योर कर सकते हैं? See, there's no cure to this. It's just that if we start to practice good recording and conversion practices. Earlier, the data used to be in, I would say, some hard form, like we have a reading values in some manual forms. So now the methods have come up where we can make it available on a platform where the data can be accessed and it can be used for different studies. So I think the conversion of the data from the manual form to a digital version would be one task that we should focus on, and recording of the data sets. Okay, if there is a rain, we record it and we keep it as a record. Then that will help us in developing a good observation for that particular location. Then that will be useful. तो इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में इसका भी स्कोप है काफी. Definitely. I think India is one of the country that is paying lot of attention towards water reuse nowadays, because the water use of India has changed a lot. Okay. Yes. So मैम, आप IIT जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट हैं, तो ऐसी क्या चीज़ है जो IITs NITs को किसी भी अदर इंस्टीट्यूट से डिफर करती है? क्यों इतनी भीड़ है, बच्चे क्यों इतने पागल रहते हैं IITs NITs में? ऐसा क्या है जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में नहीं है? See, I would say facilities used to be one key point. When I was graduating, I was determined to do this. And second is the recognition that if you're from an IIT, it's an IITian thing. So, but I would say that looking at your university, you have an enormous amount of facilities, and it's nothing like that. It's private institute or some IIT. It's about the student, how they perceive themselves. तो मैम एक और मिथ रहता है, ये मैं कहूँगा कि अक्सर लड़कियों को ये मना किया जाता है कि आप सिविल इंजीनियरिंग मत करो क्योंकि साइट पे रहना पड़ेगा, धूप होएगी, मजदूरी करवाएंगे. तो ये कितनी सच्चाई है इस बात में? डर हमेशा रहता था. Even I had that fear, and my father is also a civil engineer. But उनको देख के कभी-कभी डर भी लगता था और मोटिवेशन भी आता था. But I think I'm here now. I have done highest of my education and I'm working in a very reputed firm like Ramwall, which gives me immense opportunities for all kind of sources, from industrial work to research work. So I think there is lot of opportunities for girls also, and it is as safe as some other career option. तो मैम मार्केट में ऐसी अफवाह कह लीजिए, वो ये हवा उड़ रही है कि इंजीनियर्स बेरोजगार हैं, उनके लिए जॉब्स नहीं है. तो इस बात में कितनी सच्चाई है, आप क्या क्लैरिफाई करना चाहिए? इस बात में मैं इतना ही कहूँगी कि जॉब्स भी हैं और ऐसा कुछ नहीं है. द ओनली थिंग इज कि हमें स्किल सेट आनी चाहिए. नाउ द डिमांड इज ऑफ द स्किल्स. सिर्फ एजुकेशन से नहीं होता. मतलब इट्स लाइक नॉट ओनली योर सब्जेक्ट नॉलेज कैन हेल्प यू, बट एडिशनल स्किल्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड. You should be well groomed, well versed with different softwares. You should be technology friendly, because now we are moving from manual word to digital word or technological word. So you should be technological friendly, and you should try for different internship opportunities. You should try and get into different corporate houses which provide, or these startups. There are different startups now. Yes. They are providing good amount of opportunity. See, the student should always be ready to learn more.
The more you learn, the more opportunity will open up to you. If you are sticking to one domain, I am sorry, you are obstructing yourself or you are hindering your own progress. But yes, if you are growing your different skill sets, as well as you are learning new softwares, new technologies, new codings and everything will help you. And you should not be worried if you have the proper resources with you. So मैम, एक हमने लिया है दुबई का सिविल इंजीनियर और एक हम लेते हैं इंडिया का, तो अब उन दोनों को कंपेयर करें तो सैलरी दुबई वाले की ज़्यादा होती है, तो ऐसा क्या है? जबकि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ ज़्यादा होनी चाहिए, और रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि इंडिया से ग्रेजुएट होके बंदे दुबई, सिंगापुर जैसी डेवलप्ड कंट्रीज़ में सर्व कर रहे हैं, तो इसका रीज़न आप क्या बताना चाहें? इसका रीजन मैं नहीं कह पाऊंगी कि इसका रीजन है, बट येस, देयर इज अ डिस्पैरिटी इन इनकम सोर्सेज इन इंडिया एज वेल एज फ्रॉम ग्लोबल व्हेन वी कंपेयर इट टू ग्लोबल सिनेरियोज. But I would say you should not worry about that. You should worry more about learning these skills again, because that वो जो अपॉर्चुनिटी है जो सिंगापुर को मिल रही है वो इसलिए भी हो सकती है क्योंकि उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता हो and that person have more skills than you. And it's nothing like those are earning well, because we also work with foreign PBUs and we have equal skill sets and we get very good pays accordingly. And yes, you need to develop and groom yourself so that you are able to grab those opportunities. So मैम, जो हमारे अपकमिंग सिविल इंजीनियर्स हैं उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? I would just say कि learn and learn. I would really say learn different things, and it's not about your subject books only. Not your text that is written in the book and says that okay, I'm reading fluid mechanics, I'm reading mechanical or some other subject, irrigation, hydrology. I think you should be well versed with the practical applications of these things. Basically, practical knowledge is important. Practical knowledge is important. You need to observe what is happening in your surrounding, what processes undergoes these, what are the technological advancement that we are looking after, and what are applied in the industry in the current scenarios. So I think if you see for the future and you see what are the actual problem and how you can deal with them, I think you will be good civil engineers. Thank you ma'am for joining us. Thank you so much Pushkar for such an interesting session. तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. और अगर आपको ऐसे और पॉडकास्ट चाहिए तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो ज़रूर करिएगा. धन्यवाद.